Assalamu alaikum everyone, I'm Basim, and in today's episode of this podcast, I have a very special guest here with me, Jawad Nayyar, the visionary CEO behind DAO PropTech. Before we dive deep into the questions about DAO PropTech and its innovative products, I would want to thank Jawad for taking out time and being here with us today. Thank you, Basim. Jawad, before I ask you any questions about DAO, मैं आपसे आपके एजुकेशनल और एंटरप्रेन्योरियल साइड के ऊपर थोड़ा सा जानना चाहूँगा. If you can please tell us about that, our audience would love to hear that. I did my undergrad in philosophy, politics and economics from Warwick some 15 years ago, and उसके बाद से मैं कुछ entrepreneurial ventures में involved रहा हूँ, healthcare के अंदर, construction के अंदर, blockchain के अंदर, and then development के अंदर. Before I started working in development, मैं क्योंकि थोड़ा एकेडमिक माइंडसेट का हूँ तो मैंने उसको पढ़ना की कोशिश की, एंड आई डिड अ डिप्लोमा इन रियल एस्टेट दैट गॉट मी गोइंग एंड मेड मी थिंक दैट रियल एस्टेट इज़ अ साइंटिफिक प्रोसेस. यहाँ बिल्कुल उसको हवाई रोज़ी की तरह ले जाता है, बट एक साइंटिफिक प्रोसेस है. देयर इज़ अ लॉट ऑफ साइंस बिहाइंड द मिस्ट्री, एंड आई started reading a lot in real estate, and eventually that resulted in this venture, DAO PropTech. Very nice. Jawad, I would like to ask, how did you came up with this idea of DAO PropTech? What was your vision, and what were the problems that you were looking to solve? I think most of the financial products that we interact with are fake or have very little real grounding. They are printed or created by people, and in recession, in difficult times, they go under, and our people who invest in these are exposed. People who interact with these are exposed as well. So I thought that we'd store value for the masses in something that is real, tangible, and then developmental finance in real estate is like printing money is to the financial systems. तो अगर फाइनेंशियल सिस्टम को नए पैसे प्रिंट करने हैं चलने के लिए, तो द इक्वलेंट ऑफ दैट इज डेवलपमेंटल फाइनेंस इन रियल एस्टेट. सो वी थॉट दैट we'll tokenize the most lucrative part, which is the need of the industry as well. DAO PropTech के vision के बारे में I would learn from you. How did you come up with this, and what were the problems that you were looking to solve? सो रियल एस्टेट की इंडस्ट्री ओपेक है, उसको ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत थी. रियल एस्टेट के अंदर जो है वो कुछ लोग सबके लिए फ़ैसला करते हैं. सब मिल के अगर क्रिएट करें तो वी हैव मोर पावर इन द कम्युनिटी, एंड वी कुड मेक बिगर थिंग्स, बेटर थिंग्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट्स विद द कम्युनिटी, एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ मेड इट पॉसिबल कि अब हम इस स्टेज पे हैं कि हम इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व कर सकें इस इंडेवर के अंदर. So the timing was right, and we came up with this idea to tokenize developmental finance in real estate. Jawad, I would want you to recap these 4 years, 2020 से लेके अभी तक, your journey as DAO PropTech's CEO, navigating this company through these times. कैसे ये times रहे? What were the challenges? What were the achievements? So I think when we were starting, the timing was pretty okay to start this. We were beginning of a new economic cycle. हमने उसको आइडेंटिफाई भी किया, और उस साइकिल के अंदर हमने जो कुछ फोरकास्ट किया अप अंटिल वेरी रिसेंटली 2024 तक, वो सारा कुछ ठीक रहा. हमने उसके अंदर वी स्टार्टेड विद इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स दैट वर यूज केस ड्रिवन, विच मीन्स कि हमने उनके एंड यूजर्स को दिमाग में रखे वो प्रोडक्ट्स बनाए, ना कि हमने इन्वेस्टर्स को दिमाग में रखे वो प्रोडक्ट्स बनाए जिसकी वजह से उनकी इनकम कैपेसिटी और उनके फ्यूचर प्रॉफिट्स भी ज़्यादा हैं बाकी प्रोजेक्ट्स के मुकाबले में. एंड वो जो ज़्यादा प्रॉफिट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का ट्रांसपेरेंटली टू द कम्युनिटी हमने टेक्नोलॉजी को यूज़ किया और वो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स निकाले. इट हैज़ बीन अ वेरी फाइन जर्नी. देयर हैव बीन अ फ्यू लर्निंग्स, फ्यू चैलेंजेस, ऑब्वियसली जो हालात की वजह से भी हैं, और कुछ हमारी शॉर्ट कमिंग्स थी, because innovation obviously comes with a lot of burden, a lot of innovation has inherent burden जो कि हमने ज़रूर वो feel किया है over the last 4 years, and it has been a great learning experience. Most of the things have gone right, and some of the things that gave us learnings will definitely improve in the next cycle. Jawad, you talk about tokenization. I would want to understand this concept, real estate की tokenization.
from you, and if you can please show us from your lens where the world is headed when we talk about tokenization. So this is something जो कि यहाँ पे conventional real estate को समझने वाले को ये लफ्ज़ आता भी नहीं है. So अगर आप इसको थोड़ा सा explain करें, elaborate करें और दुनिया में इस पे क्या काम हो रहा है वो हम सबको बताएं. Well, so जब हमने शुरू किया था तो tokenization of real world assets, that's the domain that we work in. Tokenization of real world asset was, very in its very early stage. It has over the last 4 years, it has become a mainstream topic globally. Tokenization essentially is to create a digital on-chain version of any physical asset such that it is tradable with absolute transparency. On-chain का इसके मतलब है कि आप public ledgers को use करें. So tokenization now is a formal industry जिसके अंदर according to most estimates it's a multi-trillion-dollar industry in the next few years. 2030 के estimates जो हैं वो between 10 trillion से 32 trillion के estimates हैं from leading consulting groups of the world, including Citibank and Standard Chartered and BCG and McKinsey to name a few. इसके अंदर जो main tokenization की domains हैं उसमें tokenized cash is one of the main domains. Private tokenized cash and CBDCs, central bank digital currencies. फिर tokenized treasuries, government bonds की tokenization. फिर tokenized commodities, gold की और बाकी commodities की tokenization. Tokenized private equity, आप private companies में के tokens खरीद सकते हैं, shares will be tokenized. And tokenized real estate, which means buying part of real estate. हमने जो 4 साल पहले शुरू किया था वो अभी भी बहुत एक यूनिक एरिया है टोकनाइजेशन की स्पेस के अंदर भी, एंड दैट इज डेवलपमेंटल फाइनेंस टोकनाइजेशन, विच मीन्स फॉर्म चेंजिंग एसेट्स. जो एसेट्स अभी बन रहे हैं जिनके अंदर टिपिकली एक हायर रिस्क और हायर रिटर्न शामिल होता है, उन एसेट्स को यूजिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, नॉट जस्ट टोकनाइजेशन बट यूजिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बिल्ट इन एस्क्रोज, हम उनको टोकनाइज करें. The idea of tokenization, I would want to ask you कि इस particular idea के साथ जो इसके साथ लिंक्ड टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन की आपने बात की, इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के साथ आपकी क्लाइंटेल जो अभी तक बन चुकी है, हाउ वेल वर्स्ड इज दिस ऑडियंस विद दिस टेक्नोलॉजी एंड इट्स यूज केसेस, और क्या उनको अंदाज़ा है कि ये कैसा इम्पैक्ट क्रिएट करी इन द सोसाइटी? आई थिंक नॉट रियली. मेरे ख्याल से एसेंशली अभी तक की हमारी जर्नी जो है वो tokenization and the vision of tokenization was in its experimental stages, and we used our projects mainly to market the product that we are selling. हमारे ज़्यादातर clients ने हमारे projects को देख के invest किए, उनकी innovative nature, उनकी efficient pricing, उनकी better than market use cases, probably these are the factors that were more important to our current clientele. Tokenization adds a lot of value in the future. So tokenization helps maintain history of all the transactions, creates a ledger, double spending, यानी एक चीज़ को 2 दफ़ा बेचना, उसको वो रोकता है reselling of the product using smaller fractions, तो उसकी वजह से मार्केट में liquidity आती है. So tokenization के जो real advantages हैं वो ओवर द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट, रियल एस्टेट का लाइफ साइकिल 50, 60, 70 साल का है, तो हमारे करंट क्लाइंट्स को भी उसके जो एडवांटेजेस कंपेयर टू ऑल ऑफ द प्रोडक्ट्स अगले 50 साल में नज़र आएंगे. टोकनाइजेशन को एफिशिएंटली चलाने के लिए हमें जो एक कॉम्प्रिहेंसिव टूल किट चाहिए, अभी तक वो हमने भी क्रिएट नहीं किए. इट नीड्स अ मार्केट प्लेस, इट नीड्स ऑटोमेटेड मार्केट मेकिंग टूल्स, इट नीड्स स्वैपिंग टूल्स बिटवीन प्रॉपर्टीज, इट नीड्स वॉलेट्स, इट नीड्स डिजिटल ऑनबोर्डिंग. सो जो एक कॉम्प्रिहेंसिव टूल किट चाहिए वो प्रॉब्ली अगले कुछ सालों में डेवलप होगी दुनिया में भी, और हम भी उसके साथ साथ डेवलप करेंगे. बट द करंट क्लाइंट्स आर द फर्स्ट 1000 पीपल who are probably one of the first 1000 globally to invest in developmental finance tokenization. So I don't think they did it knowingly, but they have that uniqueness. That's a great I think plus point that you just mentioned कि 1000 इन्वेस्टर्स जो हैं ये सिर्फ रियल एस्टेट के अंदर वो पहले 1000 इन्वेस्टर्स नहीं हैं जिन्होंने टोकनाइज्ड डेवलपमेंटल रियल एस्टेट में पार्टिसिपेट किए इन पाकिस्तान, बट ग्लोबली. सो एक चीज़ जिसको हम सारे लोग बहुत ज़्यादा देख रहे होते हैं वो मुल्क की मईशत है, इकॉनमी को हम लोग देख रहे होते हैं.
सो हम आपके लेंस से थोड़ा बहुत समझना चाहेंगे कि जब आप डेवलपमेंट प्लान करते हैं उसको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है इम्पैक्ट कर रहे होते हैं. लास्ट 18 मंथ्स को अगर हम देखें आपके लेंस से, सो आप इस इकोनॉमी को किस तरह से देखेंगे और उसके इम्पैक्ट्स को डेवलपमेंटल रियल एस्टेट पे किस तरह से देखते हैं? See, the economic cycles, dictate how investments are made and how returns, can be measured. And I think there's a system that very effectively, efficiently using to some tools that we can discuss, control the movement of the markets. The most important of these tools is the interest rate, the monetary system and the interest rate, जिसकी वजह से आप ना सिर्फ रियल एस्टेट बल्कि बाकी इंडस्ट्रीज़ को भी बहुत एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं. And I've been watching other indicators as well, but just by having a very focused lens on the interest rate, you could see what the system really wants to do and you could predict the future. So back in 2020, we were in an expansionary cycle, which means that interest rates were coming down from 13% to, they went down to I think 7%. So it was understood that cost of capital would reduce, money would be invested in assets and businesses. So we saw a boom in VC funding, we saw a boom in real estate, and we saw a boom in most markets. In early 2022, much before the political unrest started, we were discussing it. I think we have it on podcast recorded as well. हम लोगों ने जो है वो ये फोर्सी किया कि अब हम जो है एक कॉन्ट्रैक्शनरी साइकिल में जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो पाकिस्तान में भी और ग्लोबली भी, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी और बाकी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो लेस अट्रैक्टिव हो जाएंगी. We predicted, I personally predicted around 15 to 18% interest rate, but because of adverse conditions, they went up to 22% and then stayed there for around 7 months. That was unprecedented. That was not very accurately forecasted. मेरे ख्याल से किसी ने भी ये फोरकास्ट नहीं किया था और पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से ये सारी सिचुएशन एम्पलीफाई भी हो गई. हाउएवर, आई वुड वांट टू सी पॉलिटिकल अनरेस्ट separately, and economic factors, just these economic factors themselves can give a very solid indication of where we are heading. Now the interest rates are coming back to their business area. I would not say that the cost of capital is lucrative right now, but it is slowly moving in that direction. And in the next few months, it will come into the business end of things, which would mean that हम ज़्यादा cost of capital कम हो जाएगी और इन्वेस्टमेंट इनटू अदर इंडस्ट्रीज, अदर सेगमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. एक और इंडिकेटर होता है जवाद, जिसको हम सब बहुत, हमारी एक कड़ी नज़र होती है उसके ऊपर, और वो इन्फ्लेशन का नंबर है. किस रेट के साथ चीज़ें महंगी हो रही हैं. जब आप अपने प्रोजेक्ट्स को प्लान करते हैं और डेवलपमेंट को प्लान करते हैं, हाउ डज दैट नंबर इम्पैक्ट यू एंड डज इट हैव एनी रिलेशनशिप विद द इंटरेस्ट रेट्स जो आपने अभी हमें एक्सप्लेन किए? सो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इट नीड्स टू कवर द लॉस ऑफ परचेजिंग पावर. Which means that the real interest rate has to be positive. So, and it has to be in a particular range, 2, 3, 4% historically in Pakistan. इसका मतलब ये है कि interest rate जो है वो inflation से 3-4% percentage points ऊपर एक stable उसका level है. पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म के अंदर जो है वो inflation 7.5-8% है और लॉन्ग टर्म का interest rate around 9-10% है. इन पिछले कुछ सालों में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई. इट वेंट अबव 25%. आई थिंक इट पीक्ड अराउंड 38%. सो 38% के ऊपर, उससे 3 परसेंटेज पॉइंट्स ऊपर इंटरेस्ट रेट को रखना प्रैक्टिकल नहीं है. बिल्कुल ही जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इतनी बढ़ाने का मतलब है कि इकोनॉमी, गवर्नमेंट, द होल सिस्टम वुड क्रम्बल. सो we were living in very stressed conditions in the last year. Now the inflation is down to close to its average, around 6-7% on the recent month-on-month figures, and we could expect the interest rate to follow accordingly. So yeah, there is a very strong correlation between inflation and interest rates. And if you want to see where the interest rates are heading, looking at the inflation number
is a good starting point. Also, बिकॉज इन्फ्लेशन की वजह से परचेजिंग पावर एरोड हो जाती है, तो जो चीज़ें हमारी CPI में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, जो ज़्यादा रेगुलर ख़रीदी जाने वाली चीज़ें हैं, उनमें जो चीज़ें हैं वो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट डायरेक्टली ले लेती हैं, बट इन्वेस्टमेंट वाली साइड के ऊपर उसका इम्पैक्ट विद अ डिले आता है. सो रियल एस्टेट के अंदर जो हमने रिसेंट 30% की इन्फ्लेशन देखी है, इट विल डेफिनेटली बी फैक्टर्ड इनटू द प्राइजेस, but with the delay. When people are able to save again, when inflation is back to normal and income rates adjust, very soon we'd see these last 2 years of hyperinflation being factored into the price of real estate. Okay, so थोड़े से questions अब मेरे technical side पे होंगे, और वो DAO Web 3.0 की community में नॉन टेक्निकल नहीं थे, बट Web3 कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो उसके अंदर ये कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जिनको मैं समझना चाहूँगा कि आपने जब DAO बनाई तो क्या इन पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज के ऊपर आपने कोई स्ट्रक्चर्स एस्टैब्लिश किए, एंड इफ सो तो वो किस तरह से आपके लिए प्ले आउट किए. सो देयर इज दिस टर्म डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस. I would want you to explain it to everyone who's listening to this podcast and tell us कि अगर आपने इसको implement किया तो इसके challenges क्या थे, advantages क्या थे? Well, we tried. I think that's one of the things that we tried, and I think we could improve our efforts in future version. But decentralized governance is democracy in the corporate world, or as close to democracy as you can get in corporate world, जहाँ हम बहुत सारे लोगों को बहुत convenient tools के साथ गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करने और इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनने के लिए क्या मौका देते हैं. जब हमने प्लान किया तो हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की डिसीजन मेकिंग के अंदर ना सिर्फ अपनी एग्जेक्टिव टीम को बल्कि बाकी जो हमारे पार्टनर्स एंड एम्प्लॉयज़ थे, इन्वेस्टर्स थे, उन सबको इफेक्टिवली मौका दिया कि वो हमारी डे टू डे इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट डिसीजन मेकिंग के अंदर वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर सकें. दैट्स व्हाट डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस इज़. I mean, we did not use digital tools and digital ledgers, but जो DAOs हैं उनका particularly यही purpose है कि using digital tools and tokens and using voting systems हम directly democracy को built in कर सकते हैं किसी भी corporate ethos के अंदर. I was skeptical of decentralized governance because it does need a lot of education from all participants, a lot of learning from all participants. It's a good dream to have. I think the world is probably not ready yet. We'll give it another try in a few years. Sure. Jawad, there's another term, decentralized finance. If you can break it down for everyone listening, and you can tell us कि decentralized finance पे जो DAO ने काम किया वो कैसा रहा? So decentralized finance is something that I'm very proud of. We are one of the first companies in Pakistan to think of that, implement that, and see practical benefits of that as well. It means that someone with a very small ticket, with a very small investment, could become part of big things. And as we have seen in DAO, 50,000 lakh रुपए से 2 lakh 5 lakh रुपए से from the security guard at the building to the plumber at the building to the developer is able to contribute to the system with the same pricing, which means कि जो return है वो उनके सबके लिए एक same return है. So allowing people, masses, to participate in financial activity, contribute resources and get returns on the same scale as the big investors, and जो ये elite capture है finance के अंदर उसको erode करके masses को chance दे. That's what decentralization of finance essentially stands for. So there's another term that we heard from DAO's team particularly, और वो projects की pricing से related थी. So cost based pricing. इस industry के अंदर ये term पहले किसी ने toss भी नहीं की, and इसको explain करना I would want कि हम directly आपसे सुने. What exactly was cost based pricing? How were investors benefiting from it? इसके क्या फायदे और challenges थे? पखंड ही था ऐसे, to be honest. So I was a socialist back in the days. I was a socialist. I thought wealth should be more evenly distributed, and
I believed in the power of communities and people more than I should have probably, and before the time was really appropriate for it as well. So 4-5 वैल्यूएशन मेथड्स होते हैं रियल एस्टेट की वैल्यूएशन के साइंटिफिकली स्पीकिंग, तो उसके अंदर से जो मोस्ट प्रूडेंट मेथड है वो उसको उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे प्राइस करना है, बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्रिएट समथिंग फॉर लॉन्ग टर्म below the replacement cost. You might be able to buy something in recession time, for example, because of lack of liquidity. You might be able to buy something below its cost price, but in long term, it is impossible to create something below its actual cost. So what we did was we created a model जिसके अंदर हमने cost को aggregate किया और फिर developmental life cycle के ऊपर उसको pivot कर दिया around cost, which meant that earlier stage of a developmental project, you would get to invest much below the cost, around 25-30% below the actual cost, and at later stages you pay a premium, but the long-term price, average price over the developmental cycle will be equal to the average cost. Average price is equal to average cost. That was what cost-based pricing was for a developmental project, approximately 3 years of development for us. That was our own innovation, and we locked the area and the price in smart contracts using technology. I think it did give us results. So one of the results I wanted was to distribute a lot of wealth back to the people, back to the investors, be prudent, save their wealth, save their portfolios. I think we have stood the test of times. We've lasted, and we have proven more resilient than many other developers. Many other developers with much more resources have gone bankrupt, and we have proven more resilient because of this method. None of our 1,000 plus investors are in red. Everyone is in green. Everyone has made realized or unrealized returns of 30% or more. So that was what was desired of this. However, what it means is that for the companies, for the corporate, we have lesser resources to market, resources to leverage, resources to create liquidity, resources to innovate and invent new products and invest in our teams. And based on these challenges, we want to come up with we're now coming up with a more value-driven, market value-driven pricing methods, so that the value created through these developments are distributed between all stakeholders in a more participatory manner rather than just one stakeholder. Quick question, Jawad. एक तो मैं rephrase करूँगा जो आपने ये सारी बात की, and you can correct me if I'm wrong somewhere. So replacement cost method, what this essentially means is कि आपने कहा कि एक asset है उसको replace करें अगर हम उसके components के साथ, यानी land है, एक structure की cost है और finishing की cost है, वो एक एसेट जब एक दफ़ा बन जाता है तो उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सो ये एज द टाइम पासेस बाय ये कॉस्ट बढ़ती जाती है, कभी भी कम नहीं होती. सो आप उस कॉस्ट के अराउंड अपनी प्राइसिंग को पिवट करते थे, यानी शुरू में इससे सस्ता 20-30% बेचते थे अपने ही प्रोडक्ट को, एंड एज इट वाज मेड इसकी प्राइस को ग्रेजुअली बढ़ाते जाते थे, एंड ऑन डिलीवरी इसको 30% महंगा करते थे. सो ये अपनी एवरेज कॉस्ट के अराउंड पिवट हो रहा होता था. माई क्वेश्चन टू यू वुड बी कि इस पर्टिकुलर सिस्टम में आई डोंट सी एनी डेवलपर प्रॉफिट्स, आई डोंट सी किसी स्टेक होल्डर का मेजर प्रॉफिट इस चीज़ में बनता हुआ. ऑल ऑफ दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पीपल विच इज़ गुड फॉर देम. वाई वुड अ डेवलपर वर्क विद यू, एंड हाउ हैज़ इट बिन वर्किंग विद सम ऑफ द बिग डेवलपर्स जो डाओ के प्लेटफॉर्म पे हमने देखे? वेल सो जो शुरू के डेवलपर्स डाओ के प्लेटफॉर्म पे जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स लिस्ट किए हैं, बिकॉज आई कम फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, माई फादर वॉज अ डेवलपर, एंड मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स आर क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल. सो आई फॉट विद देम, उनसे लड़ के मैंने अपनी बात मनवाई अपनी कम्युनिटी के लिए. They did not make a lot of profits. They sacrificed their profits as well. Their transactions are also locked on the same ledger. Taj Saab, for example, was the first investor in Elements, and his transaction is locked on the same ledger that 340 odd people are present on. He was the first, so he got the best price based on the exact model that we calculated. हमने तो बिल्कुल प्राइस पे भी जो है वो कुछ एक आधा रुपया भी ऊपर नीचे नहीं होने दिया. तो so there was not a lot of developer profit, and which also resulted in lack of ownership
बिकॉज सब लोगों का ही प्रोजेक्ट है. ऑल द 340 people who invested are on the same ledger, investing based on the same rules. So इस प्राइसिंग मेथड की वजह से डेवलपर्स नहीं इंटरेस्टेड हुए. ये लर्निंग जो है वो आई थिंक वी एज अ कंपनी, मी पर्सनली एज वेल, बेस्ड ऑन ऑल द प्रैक्टिसेस दैट वर गोइंग अराउंड इन द इंडस्ट्री हियर in Pakistan, I was very rigid with onboarding new developers in the early days when we were testing all of this. But in other markets, Saudi की market और दुबई की market जब हमने explore की तो वहाँ ये challenges नहीं है. वहाँ trustworthy developer brands हैं जिनकी बहुत decades की history है, and they would not adopt anything that would have a cost-based valuation की या cost-based pricing होगी. तो दैट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स जिसने हमें पुश किया कि हम मार्केट वैल्यूज़ की तरफ, मार्केट बेस्ड वैल्यूएशन की तरफ जाएं. एंड obviously with that we'll be able to have not only more developers but more resources dedicated towards tools like market making and innovation, technology development as well. Talking about innovation and talking about investment products, एक conventional market है, उसके कुछ products थे. लोग अगर हॉरिजॉन्टल इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाएं, वो फाइल्स ले लेते थे, वो प्लॉट्स ले लेते थे, उसको फ्लिप करते थे. अगर हम अपार्टमेंट्स की बात करें तो दे बुक्ड अपार्टमेंट्स ईदर ऑफ प्लान पे, या वो उसकी एक लंप सम पेमेंट करके एक अपार्टमेंट को परचेज कर लेते थे, उसको या तो रेंट आउट करते थे या तो अगेन बेच देते थे. टोकनाइजेशन ने क्या इनोवेटिव प्रोडक्ट्स इन्वेंट किए हैं, आप थोड़ा सा बताते हैं डाओ की पर्टिकुलर जर्नी में. जो हमारा बेसिक इंस्ट्रूमेंट है वो नॉन डीमार्केटेड स्क्वायर फुट है. It's a utility token where you buy a non-demarcated square feet from the whole building, which means कि वो building में किसी एक जगह पे particularly demarcated नहीं है. It's part of the whole covered area of the building, and based on certain rules you can get it demarcated. That's essentially the product. So for example, आमना होम्स के अंदर हमारे पास 9 लाख स्क्वायर फुट है और 333 विलाज हैं. So आप 9 लाख स्क्वायर फुट में से 1 फुट भी खरीद सकते हैं, 100 फुट भी खरीद सकते हैं, बट अगर आप 2070 फुट कंप्लीट करेंगे तो आप एक 6 मरले का घर अपने नाम पे करवा सकते हैं. और अगर आप 3400 फुट मुकम्मल करेंगे तो आप 12 मरले का घर करा सकते हैं. यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉन डिमार्केटेड स्क्वायर फुट एज अ बेसिक इंस्ट्रूमेंट, यू कैड क्रिएट एनी टूल दैट यू वांट. वी क्रिएटेड अराउंड 4 टूल्स, 4 प्लान्स. एक सेविंग प्लान था जिसके अंदर यूल कीप ऑन बाइंग दी स्क्वायर फिट्स over the years. एक इनकम प्लान था जिसके अंदर आप एक बड़ी अमाउंट शुरू में ख़रीद लेंगे और फिर उसके बाद हर महीने उसमें से छोटी अमाउंट बेचेंगे. एक पार्टनर प्लान था जिसके अंदर आप एक बड़ी अमाउंट शुरू में इन्वेस्ट कर देंगे और प्रोजेक्ट के एंड पे उससे एग्जिट लेंगे. और एक डिमार्केशन प्लान था जिसके अंदर आप you'll keep on buying small installments, small areas as an alternate to the off plan installment model, and when you complete your unit you will be allocated NFT or a complete unit. तो ये हमने 4 plans innovate किए थे on day one. We have been trying to work on a corporate plan as well, where people could contribute and buy units as a group and get something demarcated. But using this instrument, using this utility token as a basic unit of exchange, basic instrument, I mean, anyone can create any plan, tool, and जितना मैंने सोचा है, all kinds of Sharia compliant products can easily be created based on this tool. एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन होता है, और इफ़ आई आस्क दैट, वो ये होगा कि ये जो आपने नॉन डिमार्केटेड स्क्वायर फीट बताए, किसी बंदे ने 1 स्क्वायर फीट परचेज किया, 10 स्क्वायर फीट परचेज किए, वेयर इज़ दैट पर्टिकुलर स्क्वायर फीट लोकेटेड? एंड इफ समवन वांट्स कि उसको ये चीज़ समझ में आए कि अगर जब तक वो पूरे यूनिट में इसको कन्वर्ट नहीं कर रहा तो इस स्क्वायर फीट की लोकेशन कहाँ पे लोकेटेड है एंड हाउ डज इट बिहेव, तो इसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? अच्छा, मतलब नाम में एक्सप्लेन है ना, इट्स नॉन डिमार्केटेड स्क्वायर फीट. इट्स नॉन डिमार्केटेड स्क्वायर फीट. इट्स पार्ट ऑफ द होल बिल्डिंग. सो पूरी बिल्डिंग का कवर्ड एरिया एक लेजर के ऊपर पड़ा हुआ है. एलिमेंट्स के केस में वो 2,15,000 है, आमना होम्स के केस में वो तकरीबन 9 लाख है, यूडी के केस में वो 6,25,000 है. सो हर प्रोजेक्ट का जितना टोटल एरिया है, कवर्ड एरिया, वो एक लेजर पे पड़ा हुआ है. उस लेजर से आप एरिया बुक कर सकते हैं. वो डिमार्केटेड नहीं है, वो पार्ट ऑफ द होल है
वो डिमार्केटेड नहीं है। उसकी यूटिलिटी ये है कि जब आप उसका अपनी रिक्वायर्ड यूनिट का एरिया पूरा कर लेंगे तो फिर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इट्स अ नॉन डिमार्केटेड फ्लेक्सिबल टूल दैट इज कन्वर्टेबल एट कंप्लीशन। इनकम प्लान जिसमें एक बंदा कुछ स्क्वायर फीट्स ले रहा है और उन स्क्वायर फीट्स को आप कह रहे हैं कि हम बेचते हैं आगे जाके मंथ ऑन मंथ। सेविंग्स प्लान जिसमें बंदा कुछ स्क्वायर फीट बस लेता जा रहा है अभी, उसको नहीं पता कि उसने अभी इसको यूनिट में कन्वर्ट करना है या इसको आगे जाके बेचना है। इस पर्टिकुलर चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, वर देयर एनी चैलेंजेस इन्वॉल्व्ड इन इट, जो मंथ ऑन मंथ इनकम जनरेट करके देना किसी को या उसको मंथ ऑन मंथ स्क्वायर फीट प्रोक्योर करके देना? क्योंकि एट ऑल टाइम्स हाउ आई सी इट, देयर माइट बी अ टाइम जहाँ पे ये चीज़ मंथ ऑन मंथ ना बिक रही हो या मंथ ऑन मंथ किसी को स्क्वायर फीट देने के लिए ही अवेलेबल ना हो। सो एज अ प्लेटफॉर्म जब हमने इसको कंसीव किया था तो वी प्लान्ड इट एज अ टूल दैट वुड वर्क ऑन इट्स ओन। यू नो, पीपल विल सेल ऑन मंथली बेसिस और पीपल विल बाय ऑन मंथली बेसिस, बट as I earlier mentioned, हमने वो tools बहुत efficiently अभी तक नहीं बनाए और market के अंदर एक adoption curve है, अभी तक लोगों ने वो पूरे तरीके से समझा और सीखा नहीं है। तो we also started providing these services where we would help them sell their square feet or help them buy their square feet on monthly basis, which is all going fine until we ended up in a recession and there was a lack of liquidity in the market, and these square feet were not being sold. The main challenge is the behavioral side of it. People confuse the income tool or any other tool that we said that will help them sell with banking products or with other scam like real estate products, which was never the intent. The intent was to facilitate people using the same transparent model and allow them to sell and liquidate. When there is not enough liquidity, there is no loss on people's side. Their wealth is preserved. Rather, due to inflation, their upside is even higher. The only problem is lack of liquidity, which is partly our flaw because we haven't been able to develop and grow as fast as we should have, bring in enough liquidity, make enough tools, but also because of the unprecedented force majeure like conditions in the market. And I think most of our investors do understand that if they are not receiving, for example, income on time, they are also not, giving up their area and stand a chance to sell that area at double the price post the inflation cycle. Okay, so talking about tech, tools, advancements, आपके products, आपकी services, we've been hearing about DAO's app, which is coming soon for a long time now. Can you tell us उस ऐप की क्या डेवलपमेंट्स अभी चल रही हैं and when should people expect this app to be launched? I think प्रोडक्ट फर्स्ट अप्रोच के साथ पिछले 3-3.5 साल हमने गुजारे। जो चीज़ें इस टोकनाइजेशन के सिस्टम को इफेक्टिवली रन करने के लिए यूजुअली ज़रूरत होती, उन चीज़ों को बनाने के ऊपर हमने फोकस किया एंड ये इग्नोर किया है कि लोग क्या चीज़ कंफर्टेबली यूज़ कर पा रहे हैं, किन टूल्स के साथ कंफर्टेबली वो इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। एंड फ्यूचर में अब सो द ऐप इज, जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन वेरी ब्रीफली, द ऐप इज रेडी, इट कैन बी लॉन्च्ड लाइक 4 weeks, but is it the need of the hour? Do people really need it? Does it add any value? I don't think so, not right now. Essentially app के हमारे 2 main functions होंगे, to serve as a property wallet and to serve as a marketplace, a listing place. So we'll be launching that when we'll be launching our marketplace, just before the marketplace and when we are about to scale. That should not be very long, but before that we are working on more tools to allow people to digitally interact with our system. These include, for example, a chatbot, a digital journey. जब लोग खुद से आके, we started this last month and we have now a few dozen customers जिन्होंने digitally आके पाकिस्तान में for the first time without interacting with anyone real estate खरीदी है. That's a big win. To help that journey, we are having webinars, for example. I think वो एक बहुत important. You are hosting a few webinars. We are having webinars for advocates and affiliates of tokenized real estate. So I think those are the more urgent tools that we need to work on. We are also working on a
AI-based chatbot where we have integrated our database and our white papers with the GPT versions to help people interact and very transparently get all information that projects don't usually give as well. Measure their risks, measure their returns, and make calculated decisions. So we are working on other tools that will improve this digital journey, which is our main focus currently. And once we have the requirement to scale this, only then will the app be useful. So we see a lot of new projects coming on DAO's platform as well. Actually, a couple of those, जो कि third-party projects हैं. One is by 𝐿𝐴𝐵 and another one is by 101 Group. पहले तो DAO particularly अपने projects के ऊपर focus होके काम कर रही थी. I would want to dive a little deep into your expansion plans. किस तरह से expansion plan करें regarding the properties and the cities that you're looking forward to, and can you please tell us about this shift to जहाँ पे we're onboarding third-party projects? So DAO was this big lab where we had like 6-7 departments. एक marketing का department था which was trying to help people understand all the concepts, create a learning center, and make people understand this, create these journeys. एक sales का department था जिसका primarily काम education था, लोगों की one-on-one. I think for every customer that we've had 5 meetings of 3 hours each. So अगर हमारे 1000 कस्टमर हैं तो 5000 लोगों को हमने कम से कम जो है वो 3-3 घंटे के लिए लेसन्स दे के ये बताया कि हम क्या कर रहे हैं. And then we had construction का department, we had our own innovative brand of real estate जिसके अंदर हमने 4-5 नए brands create किए, SPVs create की जो कि use case driven, high income, futuristic real estate पे काम करती हैं. A lot of them were part of the core DAO team and our passion. So हमने futuristic workspaces का एक brand create किया, futuristic hospitality spaces का एक brand create किया, nomadic resort style living का एक brand create किया, villa community का एक brand create किया, और cubed जो कि हमारा वो container based resort है उसका एक brand create किया. So all of these were our new innovative ideas. Which also came off the DAO lab. So इन सारे की सारी चीज़ों को और इन सारे की सारी ambition को future में हम और scale करना चाहते हैं without any conflict of interest. So ये सारा कुछ हमने एक holding company के अंदर पा किया है, developmental holding company जिसका नाम 𝐇𝐞𝐫𝐞'𝐬 है, and we'd allow our community to become part of that. We'll follow up with more information on that, but I would want the existing community to be part of this grand vision of creating futuristic real estate offerings, on these lines, and get much higher return and be actually developers. So जब हम cost based से value based पे shift करेंगे तो हमारे साथ वो higher profits भी ले पाएँ और ये सारी चीज़ें create करने में हमारे साथ मदद भी कर सकें. So that was one part of what we did at DAO. The other part was the technology company. The technology company has a lot of internal interest, domestic interest. पाकिस्तान के अंदर हम बहुत सारे लोगों से बात करें, ज़्यादातर लोगों के जो concerns हैं वो again adaptation and legal and compliance related है, जिसके ऊपर हम बहुत actively काम कर रहे हैं. Utility tokens are like files issued by developers, which is the norm. And because हम उसको digitally कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ SACP being all regulators being the regulators that they are acting before thinking properly, उन्होंने एक notice डाला हुआ है जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा सवालों के जवाब देने पड़ते हैं. But any Securities and Exchange Commission anywhere in the world only has mandate to regulate securities. Real estate is a non-regulated industry in Pakistan, and our methods reinforce what the regulators should do, reinforce their mandate. It's a self-regulated space, and any regulator can come and see what we are doing and create their systems accordingly, actually. So after we have addressed these concerns in our effort to scale, हमारे पास काफ़ी considerable interest है from people like 𝐿𝐴𝐵 and other bigger groups as well, and I see a lot of them joining this revolution of decentralized finance, decentralized developmental finance in the months to come.
Also, we have interest out of Pakistan, and we have not been able to dedicate a lot of resources to that because we are, to the best of my knowledge, the only developmental finance platform working for 4 years globally. So we have a lot of interest out of Pakistan, but those places have a more regulated real estate industry. So we really do need to create our solution as per the regulations of the land and then launch there. We haven't been able to really concentrate a lot on those things, but in the years to come, we'll be working on that as well. So Jawad, Web3 industry, specifically crypto और ये जितनी भी technology है, this has faced resistance in Pakistan when it comes to the compliance and legislative authorities. आपके particular इस venture के अंदर आपको क्या challenges face हुए? So कुछ challenges face हुए because of the lack of understanding on all sides. कुछ ना कुछ challenges face हुए. एक SECP ने 17 दिसंबर 2021 को एक नोटिस निकाल दिया हमसे पूछे बगैर. उससे पहले जाके हम मिलके अपना प्रोडक्ट एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की. उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें रिसीव किया. They confused tokenization for fractionalization, and probably because of some vested interest, I don't know, I have no proof. उन्होंने जो है वो एक public advisory निकाल दी. We had the option to legally challenge that, but we went the other route and we engaged them, explained them our product, explained them that we are tokenizing a utility that is part of the developmental real estate industry already and not fractionally selling anything. Also that we are just a platform and all the investments go into the developmental SPV, which is responsible for its ledger and everything that it sells and is more prudent than anything available in the market, has more advantages compared to all other products. And they were very receptive of it. In terms of going the legislative route and getting this approved, I think there is considerable effort that needs to happen. It is a subject of a RERA, a Real Estate Regulatory Authority, and a VARA, a Virtual Asset Regulatory Authority, rather than SECP. And until these institutions come into existence and start actively seeking, I don't think, I think there's a lot of effort currently to get this done. So we are on the right side of law. We are tokenizing a utility in developmental real estate. We are very actively seeking advice to not tokenize securities and differentiate ourselves from securities. Simple question. I look confused because I want to understand the difference between tokenizing a utility and fractionalization. So आपने कहा कि उनको लग रहा था SECP को कि आप fractionalization करें. दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है? Tokenization of a utility and fractionalization. So अगर हम fractionalization के अंदर एक one of the leading companies in our region को लेके चले. GetStake is a fast growing company. तो GetStake ये करती है कि एक प्रॉपर्टी एक कंपनी के नाम पे कराती है और उस कंपनी के शेयर्स लोगों को दे देती है और उन शेयर्स को एक्सचेंज एंड ट्रेड करने का एक विंडो दे देती है. सो वो शेयर्स आर सिक्योरिटीज़. These shares, कितने टोटल शेयर कैपिटल कितना है वो उसकी वैल्यू डिटरमिन करता है एसेट की. और सारे के सारे लोग उसके अंदर लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं. GetStake के अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स जनरल पार्टनर्स होते हैं. बाकी सब लोग जो है वो लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं उस इन्वेस्टमेंट के अंदर. एंड यूजुअली ये मैच्योर एसेट्स होते हैं. When we talk about tokenizing utility, we have created a token that represents an actual non-demarcated but an actual square feet in the whole project. Built-up square feet. A promissory note of a built-up square foot that is exchangeable against a complete unit. So जब आप किसी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो day 1 पे आपको वैसे भी कुछ नहीं मिल रहा होता. It is only an investment into a brighter future.
पहले जो है वो एक डाउन पेमेंट इन ऑफ प्लान का मॉडल था, जिसका मतलब है कि आप करोड़ों रुपए की कमिटमेंट करेंगे वरना आपको सर चार्जेस लगेंगे, कैंसिलेशंस होंगी, वैसे ही बहुत सारे लोग एलिमिनेट हो जाएंगे। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर 3-4 लाख लोग जो है वो टोटल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर पाते हैं, ट्रांसपेरेंसी भी नहीं होती है, और फिर डेवलपमेंट के पूरे साइकिल के अंदर एग्जिट का तो सोचना भी जो है वो बहुत नामुमकिन सी चीज़ है। सो हमने इसको एक यूटिलिटी का टोकन बना दिया, जिसका मतलब ये है कि हर स्क्वायर फुट इंडिपेंडेंटली ट्रेडेबल है और उसकी यूटिलिटी जो है वो कन्वर्टेबिलिटी इनटू अ फिजिकल एसेट है। दैट्स द मेन यूटिलिटी। But like all other utilities on chain, tokenized utilities can be traded. So based on those tradable forms, हमने बहुत सारे और भी plans इसके अंदर built in कर लिए हैं. But main utility remains the actual demarcation, and the main vision remains कि हम जो है using these utility tokens we'll help millions of people start their journey into real estate. They could invest directly into their future rather than save a big amount and then start investing. So a question from this, can I categorize the two in this manner कि मैं कहूँ कि एक share by value है, क्योंकि जो आपने मुझे गेट स्टेक की एग्जांपल दी, आपने कहा वहाँ पे एक वैल्यू है और उसकी बेसिस पे शेयर्स बन के लोगों में डिवाइड हुए हैं, और दूसरे केस में एक शेयर जो है वो फिजिकल बिल्ट अप एसेट का है, अगर वो शेयर्स इकट्ठे होंगे और वो किसी भी यूनिट के बराबर होंगे तो वो कन्वर्टेबल होंगे, बट नेवरदलेस यहाँ पे शेयर ही नहीं है ना जी। दूसरे केस में देयर इज नो शेयर। जब वो शेयर when it becomes a share, when it becomes equity, it has to be registered with the regulator. So पाकिस्तान के अंदर भी SPV के पास एक एसेट एक SPV के पास पार्क होगा, और फिर वो SPV उसके शेयर्स को थ्रू what is it called, CDC के ज़रिए जो है वो शेयर्स ट्रेड हो सकेंगे। It's like a mini REIT. That's what the SCCP product is. हमारे केस में it's a replacement to the file product that there is in the market. जब आप बहरिया टाउन या DHA के अंदर कुछ भी लेते हैं तो आपको नॉन डिमार्केटेड प्लॉट मिलता है, राइट? एक फाइल मिलती है। हमने बिल्डिंग के अंदर वो फाइल के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया है, एक फुट को इंडिपेंडेंट फाइल बना दी है। एंड क्योंकि एक फुट जो है उसका हिसाब किताब रखना मुश्किल है और उसके अंदर डबल स्पेंड आ सकता है, और फिर उसके बाद उसकी ट्रेडेबिलिटी और एग्जिट ऑप्शंस को बनाना मुश्किल है, तो हमने उसके लिए एडवांस डिजिटल टूल्स यूज़ किए हैं, जिसके अंदर हमने सेल्फ अकाउंटेबिलिटी को बिल्ट इन किया है। Right. It's not a share. It's a utility, and it's a product that was already selling in the market for as many years. Malik Saab in Bahria Town does it. All developers do it. DHA does it. And that was our argument with the regulators as well. कि ये product हमने इन्वेंट नहीं किया, ना स्क्वायर फुट के हिसाब से हमने इन्वेंट किया, ना नॉन डिमार्केटेड के हिसाब से हमने इन्वेंट किया। हमने सिर्फ और सिर्फ इसको डिजिटल किया। सो राइट नाउ अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात करूं जो नॉन डिमार्केटेड प्रोडक्ट है मार्केट में, फाइल की मैं बात करूं, इट्स अ हाईली स्पेकुलेटिव प्रोडक्ट जिसके ऊपर से काफ़ी लोगों का एतबार और ट्रस्ट उठ चुका है। वाई शुड दे ट्रस्ट योर नॉन डिमार्केटेड प्रोडक्ट एंड दिस प्लेटफॉर्म फॉर देयर इन्वेस्टमेंट? हाउ इज इट बेटर देन दैट जो मार्केट में ऑलरेडी चल रहा था, इफ इट्स जस्ट बिहेविंग सिमिलर टू दैट प्रोडक्ट? 2014 में बहुत मेरे करीबी दोस्त है हसीम मिर्ज़ा, अब जो है वो द वर्ल्ड नोज हिज स्किल्स एंड हिज कैपेबिलिटीज़। 2014 के अंदर जो है वो कराची की फाइलें जो है वो ट्रेड कर रहे थे। जिस दिन हमारी बात हुई थी वो 198,000 की थी। तो हसीब साहब से मैंने पूछा कि हसीब साहब ये जो फ़ाइल है ये किस चीज़ की फ़ाइल है? उन्होंने कहा पता नहीं। मैंने कहा जिस चीज़ की फ़ाइल है उसका रेट क्या है? उन्होंने कहा पता नहीं। मैंने कहा ये टोटल कितनी फ़ाइलें लॉन्च की गई हैं? उन्होंने कहा पता नहीं। मिलेगा क्या इसके बदले? पता नहीं। मतलब एक हाईली स्पेकुलेटिव प्रोडक्ट था, बिकॉज कस्टमर्स ने ये सवाल किए नहीं। अगर हम ये सवाल करें पेशावर का जो है, पेशावर की फाइलें निकल आई या नहीं निकली, आई डोंट नो, स्पेकुलेशन चल रही है बहुत अरसे से पेशावर की फाइलें निकल रही हैं। वी डोंट नो द टोटल नंबर ऑफ फाइल्स। अगर वो टोटल नंबर ऑफ फाइल्स मैच हो जाएं एक्चुअल ऑन ग्राउंड एरिया के साथ, अगर उसका प्लान जो है वो पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंटली डिक्लेयर हो जाए, अगर उसकी कॉस्टिंग और उसकी प्राइसिंग ट्रांसपेरेंटली सबके सामने पड़ी हो, अगर उसके एग्जिट ऑप्शंस डे 1 पे पता हो, ऐसा नहीं है कि कुछ अरसे के बाद उन फाइलों को डिस्काउंटेड रेट पे फलां प्रॉपर्टी में एडजस्ट कर ले। अगर ये प्लान पहले से डिक्लेयर्ड हो, सब लोगों के लिए विजिबल हो, तो ये स्पेकुलेटिव नहीं रहेगा।
That's what we try to do through all of the information. I think we overloaded our customers with information, but it is this information that needs to be told in some way. हमने शायद गलत तरीके से information bombardment कर दी, information overload कर दी, बहुत सारे लोगों ने वो information देखी नहीं, but उस information का declare होना जो है, ये इस चीज़ की ज़मानत है कि वो product abuse नहीं होगा. हम नहीं कर सके abuse. मतलब हमारे projects जो हैं वो डेवलपमेंट में बी हॉल्टेड है, बट इसलिए हॉल्टेड है क्योंकि एरिया नहीं बिका. जब वो एरिया बिकेगा तो वो उस चीज़ की ज़मानत है कि वो प्रोजेक्ट पे लगेगा. जो अभी सेकेंडरी ट्रेडिंग हो रही है, आपने ख़रीदा हुआ है और आप जो है वो मुझे बेच दें, या मैंने ख़रीदा हुआ मैं आपको बेच दूँ, दैट डजंट गिव द रिसोर्सेज टू द प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट का एरिया बिकेगा तो वो पैसे जो है वो डेवलपमेंट में लगेंगे, और ये इस चीज़ की ज़मानत है. ना एरिया बिकना, उसका एरिया का एस्क्रो में सेफ पड़े होना, सब लोगों की वेल्थ की सेफ्टी की ज़मानत है. राइट. जवाद, थोड़ी सी हम ऑल्सो आई वुड लाइक टू मेंशन कि हमारा कभी भी रेट नीचे नहीं गिरा है. आई मीन ऑब्वियसली देयर इज अ लिक्विडिटी आर्ग्यूमेंट टू इट, बट as I said earlier as well, no one has ever made a loss, and because of our prudent pricing and because of this built-in escrow, our rate has never fallen below a certain point, even in the secondary market or even in P2P transactions. इसी के ऊपर मेरा अगला सवाल भी था. सो लास्ट 1 ईयर के अंदर अगर रियल स्टेट इंडस्ट्री को इन जनरल देखूं तो लिक्विडिटी काफ़ी बुरी रही है इस पर्टिकुलर एसेट क्लास में. वैसे तो हमेशा से, बट स्पेसिफिकली लास्ट ईयर में, जिसमें आपने इंटरेस्ट रेट्स मेरे साथ डिस्कस किए, इन्फ्लेशन की बात आपने हमारे साथ डिस्कस की, टोकनाइजेशन भी बिलीव कि वो ये एक प्रॉब्लम तो सॉल्व कर रही है कि वो ज़्यादा लोगों के लिए एक्सेसिबल बना रही है इस पर्टिकुलर एसेट क्लास को, एंड वी होप कि ये इसमें लिक्विडिटी को बेहतर बनाएगी. सो लास्ट 1 ईयर के एक्सपीरियंस की बेसिस पे अगर हम कंपैरिजन ड्रॉ करना चाहें कि इसने लिक्विडेशन को किसी हद तक इम्प्रूव किया इस इंडस्ट्री के अंदर और पर्टिकुलरली आपके अपने प्रोजेक्ट्स में, तो आप कोई इसको एक टेस्ट केस एग्जांपल के साथ या कुछ नंबर्स के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं हमें? उतनी लिक्विड नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी. हमने उसके लिए प्लान भी नहीं किया. वी शुड हैव प्लान्ड फॉर लिक्विडिटी. अगर लिक्विडिटी मेन कंसर्न था या आगे के लिए होगा तो हमें we should plan for liquidity in times of lower cost of capital, and we should built in profits for liquidity providers as well. We didn't do that. We distributed all the profits to the investors, and we didn't really plan for a liquidity buffer. That said, हमारे पास किसी ने 500 फुट लिए हैं. 500 फुट का जो है वो 25 लाख का वैसे कहीं कुछ भी नहीं आता था. आज से 4 साल पहले 25-26 लाख, 28 लाख, 30 लाख का. हमारे पास किसी ने 500 फुट लिए हैं तो भी उसको बहुत सख्त ज़रूरत है तो उसको 100 फुट बेचने. 100 फुट तो सबको ही बेचने, क्योंकि हर एक को ज़रूरत है. देयर इज़ so much economic stress that everyone needs to cash out some of their wealth. हमारी ना वैल्यू जो है वो आर्बिट्री थी, हमारी प्राइसिंग जो है वो कॉस्ट बेस्ड थी, तो किसी को नुकसान भी नहीं हुआ. कोई प्राइस जो है वो बहुत सारी डाउन साइड पर जस्ट भी नहीं हुई. मार्केट की हर चीज़ 25% डाउन है, हमारे रेट 30-35-40% अभी भी मार्केट से कम है. सो एवरीवन वांट्स a part of their wealth liquidated, which creates more pressure. And all of the other innovative tools, innovation के, I mean, हर चीज़ think through probably बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं हुई थी, but वो जो प्रेशर है हर बंदे की तरफ से. आधा पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है. पॉलिटिकली जो है वो हमारे हालात जहाँ खड़े हुए हैं, इकोनॉमिकली कोई इंटरेस्टेड नहीं है. नो वन वांट्स टू टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट्स इन पाकिस्तान. एंड इवन इन दीज सिचुएशंस हमारे मॉडल ने अपनी रेजिलियंस शो की है. लिक्विडिटी इज़ वन प्रॉब्लम दैट वी डिड नॉट रियली थिंक थ्रू फॉर दीज टाइम्स. रिसेशन has lasted for more than the normal average recession time ever. 18 महीने से ज़्यादा रिसेशन यूजुअली नहीं होते. पाकिस्तान में 30 महीने हो गए और अभी भी पता नहीं चले ही जा रहा है अनसर्टेनिटी की वजह से. सो ये सारे फैक्टर्स जो हैं इन्होंने हमारे लिए चैलेंजेस ज़रूर कॉज किए. बट आई थिंक कंपेयर टू द मार्केट वी आर ऑब्वियसली रिलेटिवली हमें देखना पड़ेगा तो मार्केट से तो हम बहुत बेहतर हैं. सब लोगों की वेल्थ प्रोटेक्टेड है, कोई डबल स्पेंड नहीं है, ग्रीन में है. लिक्विडिटी इज़ द ओनली कंसर्न. टोकनाइजेशन शुड हैव सॉल्व्ड इट, and with better planning in the next iteration, it will definitely be addressed. Perfect. Jawad, last 4 years का अगर हम recap करें, I would want you to highlight some of the best experiences जो इस journey के रहे in your particular life, and some of the roadblocks that you can highlight for all of us. हमारे 7 भाई हैं. 7 भाई ने जो है वो one day I found out कि 20 लाख रुपए अपना जेवर बेच के. 7 भाई कौन है?
साथ भाई मेरे पर्सनल गार्ड हैं और हमारी साइटों पे चौकीदारी का काम करते हैं यूजुअली, मेरे बहुत करीबी साथियों में से। बट आई नेवर थॉट दैट ही विल मेक एन इन्वेस्टमेंट इनटू रियल एस्टेट इवन इन डाउ। और उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं, एक दिन पता चला कि उन्होंने को 20 लाख की जेवर बेच के तो एलिमेंट्स के अंदर उन्होंने इन द अर्ली डेज जो है वो पैसे लगा दिए। दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट वेरी पॉजिटिव थिंग्स री-इंडोर्सिंग व्हाट वी सेट आउट टू डू। उसके बाद इट बिकेम अ नॉर्म, फलाने ने लगा दिए, प्लम्बर ने लगा दिए, बहुत सारे रियल एस्टेट के जो बहुत सारे हमारे वेंडर्स हैं उनके अंदर से ऑलमोस्ट ऑल आवर वेंडर्स आर इन्वेस्टेड, मोस्ट ऑफ आवर एम्प्लॉइज एंड partners are invested, heavily invested, their families are invested। हम लोग जो है वो मतलब as we discussed earlier, हमने सिर्फ एजुकेशन का काम किया है, कोई बहुत एग्रेसिव सेल्स टैक्टिक्स यूज़ नहीं की, और जो लोग हमारे आसपास थे वही ज़्यादातर लोग जो है वो हमारे अर्ली इन्वेस्टर्स हैं, और that's a big win। साद भाई ने जो अपनी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट की, कैन यू टेल अस अबाउट हिज जर्नी कि उन्होंने अगर कोई एग्जिट लिया, what was his goal while investing, and क्या वो गोल अचीव कर पाए या क्या था? Well, he didn't discuss with me. उन्होंने अपने गोल्स और अपने प्लान्स मेरे साथ डिस्कस नहीं किए, but for at the time that he invested in, his 20 lakhs should be worth around 45 lakhs now or more. And yeah, I think gold, while the gold has moved significantly as well, I think मैच या बीट कर रहे होंगे गोल्ड को इवन इन दीज टाइम्स एंड इन द फ्यूचर बाय अ मार्जिन। राइट। जवाद, रोड ब्लॉक्स आई वुड वांट आप हाईलाइट करें इन 4 सालों में जो मेजर रोड ब्लॉक्स आए डाओ की जर्नी में। आई थिंक एक रोड ब्लॉक जो है वो बिहेवियरल साइड का है, लोगों की अडॉप्टेशन टू टेक्नोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग द न्यू टेक्नोलॉजी, एंड I think हमने भी उसके अंदर contribute किया by not addressing it directly and at scale, but rather trying to educate people, in one-on-one meetings. So ये एक significant roadblock है जिस, we could have used other innovative marketing and sales techniques to really, educate people at scale. ये एक हमारी तरफ से ये चीज़ है जो आई थिंक वी नीड टू एड्रेस दिस, एंड इन द नेक्स्ट साइकिल दिस इज एट द टॉप ऑफ माई एजेंडा टू एजुकेट द मैसेज ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ टोकनाइजेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। गवर्नमेंट की लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट इज सैडली वन ऑफ द मेजर रोड ब्लॉक्स। दुबई के अंदर जो है वो इनोवेशन हब बने हुए हैं, उनके अंदर फास्ट ट्रैक सैंडबॉक्स की है, AI कैंपस बना दिया उन्होंने। अब पहले ब्लॉकचेन का उन्होंने कैंपस बनाया था, अभी AI का कैंपस बना दिया है, क्रिप्टो पेमेंट्स एक्सेप्ट करें, सिंगापुर के ऊपर पूरा का पूरा टोकनाइजेशन का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, and these are very run of the mill products, जो जिस तरह हमने पहले बात की, टोकनाइज कैश, ट्रेजरी, प्राइवेट एक्विटी, कमोडिटीज़। हम जो है वो इस स्केल के ऊपर पाकिस्तान में डेवलपमेंटल फाइनेंस को टोकनाइज कर रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट की भी रिक्वायरमेंट है। व्हाट इट रियली मीन्स इज कि हम रोड्स को टोकनाइज कर सकते हैं, डैम्स को टोकनाइज कर सकते हैं, वी कैन टोकनाइज all the assets that the government wants to privatize, and people from Pakistan or Pakistani diaspora can directly buy those in a tokenized space। एक ऑपरेटर चाहिए और फिर फाइनेंशियर्स चाहिए, that's what it is। गवर्नमेंट अगर इसको एक्टिवली परसू करती या इवन अभी भी परसू करे तो my personal goal is to create 5 million new tokenized real estate investors in the next 6 years, and the Vision 2030 that we're coming up with. And I think that's the lifeline for the government as well. Building wealth at scale for the masses, and using that to create, to build new projects and to also create wealth and create financial products. Currently, अगर हम पाकिस्तान की real estate industry को देखें तो can you tell us about the current addressable market जो real estate industry की है, and the housing need? We all listen के हम लोगों की housing need तो बढ़ती जा रही है with the increase in population. तो क्या उस स्पीड से हमारी
purchasing power भी grow कर रही है? Will this population be able to afford the housing products that we are making? थोड़ा सा इसके ऊपर I would want you to elaborate on. No, obviously no. We need so access to credit, access to financial tools is the only way to empower the masses to buy these products. जिन भी मुल्कों ने ज़्यादा तरक्की की है on the back of real estate, we have a Chinese model. उन्होंने बहुत ज़्यादा build किया. You know the big American dream. It is usually based on access to credit. So that's a mortgage-based system. Yeah, I mean we can have Islamic products built on that as well. Tokenization के अंदर बहुत आसान है. मतलब आपने एक घर के 200 हिस्से किए, 240 हिस्से किए 20 साल के प्लान के अंदर, एक हिस्सा एक महीने का, तो एक हिस्सा आपने ख़रीदा एंड 239 हिस्सों का रेंट पे किया. नेक्स्ट मंथ आपने एक और हिस्सा ख़रीदा और 238 का रेंट पे किया एंड यू मेक अ प्रोडक्ट फॉर 20 years. And you can do it similarly. As I said, using the basic instrument of non-demarcated square foot, you could create infinite number of variations. Jawad, I would want to ask you tokenization or the new way जिसमें real estate investing I would say reinvent हो रही है. इससे आपकी 1000 users की customer base अभी तक how satisfied it is? I think it's relative compared to a lot of my other friends who did developmental real estate. I think मेरे 1000 के 1000 customers बाकी brands के customers से relatively ज़्यादा खुश होंगे. Gains में भी, returns में भी. Liquidity के concern की वजह से कुछ लोग नाराज़ हैं, but we're trying to solve those problems currently as well. And even if liquidity is not enabled, all it means is कि उनका अभी जो area है वो एक compromised price के बजाय future में एक true value के ऊपर बिकेगा जो अभी की price से probably double होगी. Our target exit, for example, for Elements is around 30,000. For UD, it's like 40,000. These are iconic projects, futuristic and iconic projects with a very high income capacity and unparalleled to any other development in their respective areas. So अभी के कुछ नाराज़ customers liquidity की वजह से ज़रूर बहुत खुश नहीं हैं, but I think future में वो हमारे prudent methods को appreciate करेंगे और बहुत सारे high returns enjoy कर पाएंगे. And by and large, I mean I'd want to learn and get feedback from our customers as well. But I think by and large, people do appreciate the efforts that we have done, the new methods that we have introduced, the transparency that we introduce in the industry. And जितने लोगों से मेरी बात हुई है, except for let's say 4 or 5 people out of that's a very small percentage. I mean, not saying that I don't care about them. Due to all the challenges that we face, मैं actively उनके problems को address नहीं कर पा रहा, but except for very small number of people, people do understand and appreciate the effort and are willing to ride this wave with us. And I am very humbled by this as well. And we are creating plans for these same people to enjoy opportunities that we create in the future as well and ride the next economic wave, the next big cycle with us. And make much higher returns. एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो इस इंडस्ट्री के काफ़ी से प्लेयर्स से हम लोगों को सुनने को मिलता है. रिसेशन जो है और इकोनॉमिकली टेंस टाइम्स जो हैं जनरली इनमें लोग दे ऑफन क्वेश्चन कि यार इस तरह के टाइम के अंदर कैसे पैसे कमाएं जब कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रही, जब कोई कुछ ख़रीदना ही नहीं चाह रहा, जब सब बंदे सब कुछ बेचना चाह रहे हैं. सो इस पर्टिकुलर टाइम में हाउ डू पीपल how should people make money? रिसेशन में कैसे पैसे कमाए जाए? एक तरीका तो ये है कि आप नॉन इस्लामिक प्रोडक्ट्स को यूज़ करके खुल के जुआ खेलें. यू शॉर्ट द मार्केट. इफ़ द मार्केट अलाउज, यू शॉर्ट द मार्केट इन फॉर्मल और इनफॉर्मल वेज एंड मेक मनी. That's something that I don't really advocate. That's something counterproductive. Paisa, as we discussed earlier, Paisa it's a fake tool. And to create negative externalities in the economy and to negatively impact other people for such a fake tool is not desirable. तो पैसा अगर जायज़ और हलाल तरीके से कमाना है तो सब मिल के
कुछ प्रोडक्टिव करके उसकी वैल्यू को शेयर करे, ये एक ऐसा तरीका है जिसको मैं एडवोकेट करूँगा। एंड रिसेशन के अंदर ये अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती हैं। आज से 3 साल पहले जब हम कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन की बात करते थे और बाइंग एट द वैल्यू और बिलो द रियल वैल्यू की बात करते थे, तो यानी ये बात हमारी टीम में भी लोगों को समझ नहीं आती थी कि रियल वैल्यू के ऊपर कोई चीज़ कैसे अवेलेबल होगी। बट रिसेशन के अंदर रियल वैल्यू से 20, 30, 40% डिस्काउंट पे भी चीज़ें अवेलेबल है। रोज़ाना ऐसी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं जिनको देख के मेरे भी मुंह में पानी भरा था कि यार ये तो फ़ौरन से ख़रीद ही ली जाए चीज़। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के बाद वो प्रॉब्ली अपनी रियल वैल्यू से 40% डिस्काउंट पे खड़े हुए हैं। 40% की अपसाइड अवेलेबल है। ज़्यादातर मार्केट, इट्स मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द मार्केट that are going to get 40% higher return than the normal average in the next 3 years. So investing right now, investing in the right products, and using your leverage properly is the way to ride recessions. So इस particular recession की अगर बात करें, the time it has lasted, we have seen some very big names wiped out from the market. Developers जो लोगों के पैसों को लेके इस टाइम पे पता भी नहीं है कहाँ पे. So every broker who advocated for those developers, every investor who invested with those developers, इस टाइम के ऊपर they've taken a step back और वो सब के सब एक ही क्वेश्चन जहन में लेके बैठे हुए कि स्कैम से कैसे बचें या हाउ टू आइडेंटिफाई दैट. एनी टिप्स दैट you'd want to give to them specifically? The first investment handbook that I created ever, which you guys never used properly, started with an investment in education pays the best return. An investment in education pays returns higher than real estate. Education is more real than real estate. So, seeking, educate themselves, give that extra thought process that is required before making the investment. Do your thorough research. That's where you start. Also, I think we don't have that open environment to discuss ideas and plans and products. Regulation तो जो है वो कहीं खड़ी है, but हमारा private sector भी जो है वो collaborate कर सकता है. Some people are doing it now, to have systems built in such a way where investors are protected. एंड इसी में इंडस्ट्री की भी जो है वो मदद है. तो आई थिंक प्राइवेट सेक्टर को ये करना चाहिए. उसके अलावा सो अगर आपको जो है वो बैंकिंग प्रोडक्ट्स ऑफ़र किए जाएं तो उनसे बचें. अगर वो प्रोडक्ट्स बैंकिंग प्रोडक्ट्स रियल एस्टेट की कंपनीज नहीं ऑफ़र कर सकती हैं. गारंटीड रिटर्न्स, that's one of our biggest mistakes as well at small scale. But guaranteed returns are something that real estate की कंपनियाँ cannot offer. Rental from developmental projects is something that is stupid. इससे ज़्यादा क्या stupid है? एक बिल्डिंग बन रही है, उसके ऊपर रेंट दिया जा रहा है, फिर उसको क्या नहीं, ये रेंट नहीं है, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट नहीं है, ये इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट नहीं है, ये फलाना है, ढमकाना है. मतलब ग्रीड, एक्सेसिव ग्रीड से बचें, थॉरो रिसर्च करें. बैंकिंग प्रोडक्ट्स अगर यूज़ करने हैं तो बैंक के साथ यूज़ करें. इन्वेस्टमेंट के गोल्स जो हैं वो अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करें. पर्सनल लेवल पे आई थिंक आई फील रिस्पॉन्सिबल. कुछ कंपनीज़ का तो मैंने टाइमिंग लिख के भी जो है वो फोरसी किया था या प्रिडिक्ट किया था. नॉट दैट आई एम कोई नजूमी नहीं हूँ, बट फ्रॉम द लुक ऑफ थिंग्स +- 3 months पे वो कंपनीज जो हैं जो मैंने प्रेडिक्ट की थी उनमें से काफ़ी सारी कंपनीज बैंकरप्ट हो गई. सम हैव बीन मोर रेजिलिएंट. ऑल माई प्रेयर्स टू देम, बिकॉज जो बैंकरप्ट हुई वो उनकी वजह से मार्केट बहुत ख़राब होगी. अगर कोई और भी बैंकरप्ट हो जाए तो इन हालात में तो और मार्केट ख़राब होगी. बट आई थिंक कि जो लोग ओपिनियन मेकर्स हैं उनको ज़्यादा बोलना चाहिए. हम भी कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में हम ज़्यादा इंगेज करें ऐसी एक्टिविटीज़ के साथ जो कि इंडस्ट्री को ख़राब करने का पोटेंशियल रखती है. टॉकिंग अबाउट ओपिनियन मेकर्स एंड ओपिनियंस, अक्सर कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है, एंड आई वुड वांट टू
discuss it with you. Generally लोग आजकल because of high inflation जब भी कोई investment करने का सोचते हैं और real estate में specifically सोचते हैं तो वो इसको अपने monthly expenses को set off करने की नज़रिए से सोच रहे होते हैं. So when they compare the monthly return that they get from a genuine real estate product, it is pretty low as compared to a banking product जो उनको मिल रहा होता है. So उस particular case and point के लिए any advice that you'll have for that particular segment? Because that's not true. So बैंक का long term return जो है पाकिस्तान का long term KIBOR is around 9.5%, and what it effectively means is कि जो लोगों को return मिल रहा है वो below 9% है. Real estate की long term average is around 12% with a variance of around 3.5%. Built up real estate and developmental real estate, because of the higher risk, if priced properly, should pay higher returns. We price it in a way where it will pay at least 2.5 to 3x the returns in early stage of development. So हमारे पास 25, 28, 30% की करीब return मिला है और मिलेगा future में भी. And that's far more than the banking products. बैंक का जो है वो बैंक का return is around 2 to 3 percentage points above the inflation rate. So the bank return is more or less covering your inflation and 2-3 percentage point above that. Extra. जिसका मतलब ये है कि 10 साल के ऊपर आपको real terms में 30-35%, 40% growth मिलेगी. Even compounded भी 40% growth मिलेगी 10 साल के अंदर. Real terms में. You will be able to buy 40% more things or 40% of the CPI, 40% of the consumer basket more than 10 years ago. That's the only return that you'll get. जब आप जो है वो इसको नॉर्मल रियल एस्टेट में लगाएंगे तो वो 6-7-8% हो जाएगा. उसके अंदर रेगुलर इनकम भी शामिल हो जाएगी. That will be a considerable difference compared to each percentage point above that is a considerable difference when compounded for long term. इसलिए बैंक में पैसे रख के किसी ने कोई छप्पड़ नहीं फाड़ा है. रियल एस्टेट मैच्योर के अंदर भी रख के लोगों ने बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट की है और वो 12-14% की रेंज से कभी भी नहीं बढ़ी. अगर आप 25 साल के ऊपर 12-14% को देखेंगे तो द नंबर विल शॉक यू. एंड आवर एम इज़ कि हम इसको 25-28%, 30% करें. सो 10 लाख ओवर 10 years at 28% is something like 11 million. राइट. सो 10 साल में 11 गुना कर लेंगे आप पैसे. यही अगर बैंक में होता तो बैंक में 25 लाख के करीब होता, 25-28 लाख के करीब होता. That's a huge difference. Yeah. Right. Jawad, globally things are changing. Locally पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें, मईशत को देखें, काफ़ी सारे फैक्टर्स को देखें, चीज़ें चेंज होती हुई नज़र तो आ रही हैं. Thousands of people have trusted you with their wealth. Many are joining you right now as we discuss, or this point onwards be. What is your vision for DAO PropTech in the times to come, and what would be the CEO's message to the people? Well, it's a huge responsibility. I am thankful, humbled, honored, indebted for all the trust. Also, I think for not planning it to the nth level and leaving some points open, that motivates me to work harder the next time and improve, because I think some of the expectations we were not able to fulfill. That said, I think पाकिस्तान के अंदर 40-42 लाख लोग हर साल पैदा हो रहे हैं, if my numbers are not wrong. That's the city size of Faisalabad that needs to be created every year and growing. And our population growth rate numbers are not coming down as per all predictions. So 40 लाख लोग और नॉर्मल अगर आप जो है वो 250-300 स्क्वायर फीट पर पर्सन के हिसाब से रियल एस्टेट क्रिएट करना इन्वेजन करें इन लोगों के लिए, तो कोई हमें 1.5 बिलियन स्क्वायर फीट, 1.5 to 2 billion square feet per year चाहिए. I think together we could make those real estate products that are for the younger lot, futuristic, are built for the next 50 years,
and built in a way which supports the lifestyle as well, the nomadic lifestyle, the flexibility of moving, the flexibility of wealth, accumulation of wealth, income from that wealth, and allowing people at scale to join. So as I said, our target is to make 5 million new real estate investors invest in tokenized real estate by the year 2030 and contribute to a large part of this development through our own development products and through partnerships with other more renowned developers across Pakistan. In terms of advocates for this industry, I think brokers and dealers in this industry, we need to educate them, update their skills. हवाई रोजी नहीं है इतनी, I mean, रोजी सारी की सारी हवाई है, obviously रिस्क अल्लाह ताला देता है, but there's some science to it. It's the collective action of the whole industry that results in this, in the final price movement, and we could, to a very large extent, predict it. वो कोई बहुत नजूमी का काम नहीं, हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसके अंदर कैलकुलेटेड एडवाइस को शामिल कर सकते हैं. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज अ साइंस, रियल एस्टेट इज अ साइंस, फिडेस्ट्री ड्यूटीज एंड एथिक्स शुड बी अंडरस्टूड. एंड जब एक बंदा एक ख़राब प्रोडक्ट निकाल देता है मार्केट में, फिर उसकी देखा देखी बाकी सबको भी फॉलो करना पड़ता है. सो आई थिंक वी नीड टू, एट ऑल लेवल्स, एट डेवलपर्स, एट द ब्रोकर्स एंड एफिलिएट लेवल्स, एट द इन्वेस्टर लेवल, हर बंदे को एजुकेशन हेल्प कर सकती है. और इस इंडस्ट्री, आई मीन, दिस इज, एज आई सेड, all financial products I believe are fake. Real estate is tangible, physical, less fake than other products, and it should be everyone. I respect everyone working in this industry more than any other financial industry. I respect everyone in this industry, and if we realize our duty, if we understand the responsibility that we have, I think this industry will be the backbone of finance and fintech in years to come. Right. Thank you, Jawad. Thank you for your time. And thank you to all listeners who are tuned in today with us. If you have any more questions, feel free to reach out to our team. Allah Hafiz.